Hello and assalamu alaikum everyone. Thank you so much for clicking this video and I warmly welcome all of you guys over here. I know most of you guys are getting confused in the use of since and for in the sentence, so don't worry about it. Now I'm going to explain how to use since and for in the sentence according to the situation. I have created my own rules so that I can remember the difference between both of them. Or you can say these are some tricks that you can also implement while using the since and for in the sentence while you're speaking English language. So let's begin with the first trick. Since is used in such a situation where you know about a specific point in the past, or you can say in the time. For example, if you are talking about something in which you know when the work was started in the past and still it's happening. Still it's not completed, it's happening. In that condition, you have to use since. For example, it has been raining since morning. It means you know about when the rain was started and that was morning and still it's happening. On the other hand, for is used for such a situation in which you are talking about a duration, or you can say a time period. You can use for in this sentence when you know about how much time period you have spent or in how much time period the work has completed. It can be 4 years, it can be 2 years, it can be 3 years, it can be centuries. A period, a duration that you are confirmed about and you know that in this duration the work has completed or the task has completed. So in this condition you can use the for. In case of since, आप since word को उस वक्त sentence में यूज कर सकते हैं जब आपको एक time period का पता होता है. मतलब अगर आप एक fact के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने उस वक्त से काम start किया था, मतलब आपको एक time में या भी जो भी time period था उसमें एक specific point का पता होता है, आप वहाँ से start करते हो. For example, since 1992, since 1998 या since 90, I've been working since 90. इट मीन्स कि आप उस वक्त से काम करें. मतलब आपने ये नहीं कहा कि मैंने इस टाइम से लेके इस टाइम तक काम किया है इतना या इस ड्यूरेशन में काम किया है. यू आर टॉकिंग अबाउट मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था या मैं उस वक्त का कर रहा हूँ. इस कंडीशन में आप एक स्पेसिफिक पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहे हो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट अ ड्यूरेशन. ये स्पेसिफिक पॉइंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ साल ही हों या ईयर्स ही हों या सेंचुरीज ही हों. आप ये डेज भी हो सकते हैं, ये सीजन भी हो सकते हैं और ये स्पेसिफिक टाइम भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, I've been working on this project since Monday. इसमें आप एक प्रोजेक्ट पे मंडे से काम कर, तो इस सेंटेंस पे आप किसको यूज़ करोगे? since को, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पता है. आपने ये नहीं कहा कि मैं मंडे से ट्यूसडे तक काम किया है मैंने. हो सकता है कि आप मंडे से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आज फ्राइडे है तो आपने 5 दिन इस पे प्रोजेक्ट पे लगा दिए हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने मंडे से काम करना स्टार्ट किया था. लेकिन इस कंडीशन में भी आप इसमें फॉर यूज़ नहीं कर सकते. आप सिर्फ इस कंडीशन में इसमें फॉर यूज़ कर सकते हो अगर आप कहें कि आई बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 days. अगर आपको पता है कि स्पेसिफिक किस टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है या आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ओनली इन दैट कंडीशन आप यूज़ करेंगे फॉर. क्योंकि आपको पता है कि 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हो गए हैं मैंने काम किया इस पे या मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ. पर इन केस अगर आप कहते हैं कि मैं मंडे से काम कर रहा हूँ, तो आपने एक स्पेसिफिक टाइम को, एक स्पेसिफिक पॉइंट को पॉइंट आउट किया. मतलब पूरे जो हफ्ता है, जो पूरा वीक है, उसमें आपने सिर्फ एक पॉइंट लिया है जहाँ से आपने काम करना स्टार्ट किया था एंड स्टिल यू आर डूइंग दैट, स्टिल यू आर वर्किंग ऑन दैट. सो इन दिस कंडीशन यू विल यूज सिंस. There's a simple trick to know what to use in this sentence. Ask yourself a question. When I just started working on this project, or when I started working. अगर आपको आंसर एक वर्ड में मिलता है कि मंडे, आपने कब काम स्टार्ट किया था? मंडे से, या फिर 2020 में, या फिर 2019 में, या फिर बाहर के मौसम से, या फिर कह रहे हैं कि गर्मियों से आपने काम करना स्टार्ट किया. अगर आपको आंसर एक वर्ड में मिलता है, सो इन दिस केस यू विल यूज सिंस. पर ऑन द अदर हैंड, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं खुद से कि आपने काम करना कब स्टार्ट किया और आपको 2 वर्ड में आंसर मिलता है, 2 सालों से या 3 सालों से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 15 सालों से, इट मीन्स यू विल यूज फॉर इन द सेंटेंस. और मोस्टली वो सेंटेंस जिसमें आपने फॉर यूज़ करना होता है, उसका आंसर या फिर कह रहे हैं कि उसका टाइम 2 डिजिट्स में या 2 वर्ड्स में प्रेजेंट होता है. या फिर फर्स्ट वो कोई नंबर हो सकता है जैसे 2, 4, 5, 6, 18, जो भी कोई, मतलब इन्फिनिट कोई भी नंबर हो सकता है. और सेकंड जो उसका पार्ट होगा, मतलब सेकंड वर्ड होगा, वो हमेशा ईयर्स, सेंचुरी या कोई स्पेसिफिक टाइम को शो करेगा. जिस सेंटेंस में आपने फॉर यूज़ करना है उसका आंसर या उसका टाइम 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा, और जिस सेंटेंस में आपने सिंस यूज़ करना है उसका आंसर आपको एक वर्ड में मिलेगा. मतलब सिंस मॉर्निंग, सिंस 1922,
since 1948, since 1821, since morning, since evening, since Monday, since Tuesday. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अगर आपको आंसर एक वर्ड में मिलता है so you will use since in the sentence, और अगर आपको आंसर दो वर्ड्स में मिलता है then you have to use for in the sentence. I hope now you guys have got it. So now let me give you some simple examples to point out both of the conditions so that you can memorize it for the future also. So first let me tell you the use of since. You can use it as I've been working since morning, I've been working since Monday, I've been working since evening, I've been working on this project since summer, I've been reading this book since Monday night, or you can say the Tuesday night or anytime. On the other hand, to use the for in the sentence, for example, I've been working on this project for 4 years. I've been watching this drama for 2 days. He has been reading this book for 3 months. I've been playing this game for 2 years. I've been struggling for this post for 5 years. So these are the examples, and that is the basic difference between the use of the since and the for in the sentence while speaking to anyone else. I hope now you have got it, and still if you have any confusion then obviously you could ask me in the comments. And if you think that this video was helpful for you, then like this video, and also if you want to get more videos like that, and if you want to speak just like native speaker and want to learn English language in an easy way and in faster, so subscribe my channel. And thank you so much for watching my video till end. Inshallah, see you soon in my next video. Till then, take care, goodbye.